Now we will study about average speed. How will you define or how will you calculate average speed? Suppose a train is standing here and the speed of the train is 0 as the train is at rest position. Okay, you have to board from Delhi to Meerut station. Earlier, the speed of the train was 0. As the driver starts the train, तो उसकी स्पीड जो है सपोज पॉइंट ए तक the speed of the train was less, means it was moving very slow. From point A to point B, the speed of the train increases, and from point B to Meerut station, means when the station is about to reach, तो ट्रेन की स्पीड दोबारा स्लो हो गई. ओके, सो ड्यूरिंग दिस जर्नी ट्रेन की स्पीड जो थी इट वॉज नॉट कॉन्स्टेंट, मीन्स वो सेम नहीं रही, वेरिएबल था. ओके, सो सपोज फ्रॉम दिल्ली टू पॉइंट ए और टू स्टेशन ए, जब ट्रेन की स्पीड स्लो थी तो उसने एक्स डिस्टेंस कवर करा and time taken to cover the distance x is t1. उसने x distance cover करा और कितने टाइम में किया, t1 में. Then when its speed increases, means from point A to point B, the distance covered by the train is y and time taken to cover this distance is t2. Then from point B to Meerut, distance covered by the train is z, and time taken by the train is t3. So how will you calculate the average speed? Okay, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चली, एक ही स्पीड से नहीं चली है, तो हाउ विल यू कैलकुलेट द एवरेज? यू विल कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस and total time and divide them. So average speed can be calculated by dividing total distance with total time. Okay, speed ka unit is meter per second, average speed unit is also meter per second. This is how you will calculate average speed. The next term is velocity. When we studied about distance and displacement, we have studied कि दोनों ही लेंथ है, वो लेंथ ऑफ पाथ है, वो शॉर्टेस्ट लेंथ है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. बट द डिफरेंस इज़ कि वो स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. सेम इन द केस ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड जो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इट इज़ द vector quantity. So how will you define velocity? Speed you have studied distance upon time. तो velocity क्या है? Distance in a given direction upon time, and distance in a given direction you can write it as displacement, क्योंकि distance scalar quantity है. जब उसमें direction add कर दिया आपने कि distance covered by a body in a given direction, तो that becomes डिस्प्लेसमेंट. तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया. तो वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम. नाउ it is a vector quantity. Second point, it is a vector quantity and it can be zero. How it can be zero? You have studied कि in circular path, when a body is moving in a circular path, डिस्प्लेसमेंट इन दैट केस इज़ ज़ीरो. सो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो ज़ीरो अपॉन कुछ भी हो टाइम, ज़ीरो अपॉन समथिंग इज़ ज़ीरो. सो इन दैट केस योर वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो. सो इट कैन बी ज़ीरो. द नेक्स्ट टर्म इज़ एवरेज वेलोसिटी. यू हैव सीन जस्ट नाउ कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है.
ओके, स्पीड जो है इन दिस केस यू हैव सीन कि इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, इट इज़ वेरिंग. So, how will you calculate average speed? Suppose a car is moving at a speed of 50 km per hour. Okay, then a car increases its speed. Suppose now its speed is 80 km per hour. So, how will you calculate average velocity? You will just add its initial velocity and final velocity and divide by 2. Why divide by 2? You are calculating the arithmetic mean. Okay, in class 8 maths you have studied how to calculate mean. Mean का formula क्या था? Sum of observation divided by number of observation. So here sum of observation is initial velocity प्लस फाइनल वेलोसिटी. और कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं तुम्हारी? 2, 1, 2. सो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 2. सो यू कैन डिफाइन एवरेज वेलोसिटी एज द arithmetic mean of initial velocity and final velocity. Okay, this formula we will use in numericals. Average velocity निकालने के बहुत सारे numericals we will do, but कहीं किन्हीं क्वेश्चंस में क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन होती, तो हाउ विल यू कैलकुलेट? इन दैट केस वी कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट. ओके, अगर डिस्प्लेसमेंट इज नोन टू यू and time is given to you, then you can calculate average velocity. So in numericals we can use both formulae, either this or this. Okay, now you have studied in that topic distance and displacement कि वो distance और displacement कब equal आते हैं? when the body is moving in a straight path. ओके, इन दैट केस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा इक्वल रहता है. सो सेम इन दिस केस कि तुम स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये कब इक्वल आएंगे? इनका जो आंसर है किन कंडीशंस में इक्वल आएगा? सो व्हेन द बॉडी कवर्स द डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट पाथ, जो बॉडी जो स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी तब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल. ओके, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा इन अ गिवन टाइम तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल होगी. तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दे बोथ आर इक्वल व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ. और एवरेज स्पीड का आंसर इट इज़ ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन 1. ओके, सो बाय दिस द क्लास गेट्स ओवर and please I request you all, please when you submit your assignment please mention your name on the top of the assignment. Okay, otherwise it would be difficult for me to maintain the records. Thank you all.